That is the general equation of a line, angle between the lines, and relation between the slopes, and all these things. Okay, let's start now the remaining part of the straight line. Now we are going to learn about the general equation of a line. General equation of a line. Okay. Now this general equation is in the form of ax plus by plus c is equals to 0. This is called as the general equation of a line. From that, if I convert this into by is equals to minus ax minus c after dividing by b minus a by bx minus c by b, then I get that the slope of a line is m, which is equals to minus a upon b. That is negative of coefficient of x upon coefficient of y. This is the slope of the line. And here y intercept is minus c upon b. Okay. Acha, one more thing you have to remember that to find the y-intercept, you do one more thing. You just put x equals to 0 in the equation, you will get the y-intercept. If I substitute x equals to 0, then by is equals to minus c, y is equals to minus c by b is called as the y-intercept. If I want x intercept, what should we do then? क्या करेंगे हम बच्चों लोग बताओ? y को क्या करेंगे? जीरो डालेंगे, बराबर। और अगर मैं y को जीरो डाल दूं इसमें तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी? ax plus c equals to 0, which means x is equals to minus c upon a. So the answer is minus c upon a. Correct? For the x-intercept, we put y equal to 0. From that, we'll get the x-intercept as a minus c upon a. Now, moving further, remember one thing that if a line is passes through, if a line is passes through origin, is passes through origin, then the value of c is 0. Then the value of c is 0. That means an equation which don't have any constant term is always passes through the origin. Is always passes through the origin. Okay, let's see. Moving forward now. Now let's do one thing for the parallel condition for parallel and perpendicular lines. Condition for parallel and perpendicular lines. Perpendicular lines. Okay. Let L1 is the first line which has the equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and L2 is the second line which is a2x plus b2y
plus C2 is equals to 0. These are the two lines. Let and M1. M1 is nothing but slope of line L1. Slope of L1, which is equals to minus A1 upon B1. And M2 is nothing but slope of L2, which is equals to minus A2 upon B2. See that what I did from that now. How to find a slope of a line when it is given in the general form? Simply negative of coefficient of x upon coefficient of y. That we did here. Okay. Now, first case 1, line lines L1 and L2 are are parallel. If they are parallel, we know that condition yesterday we seen. If two lines are parallel, then M1 is equals to M2. M1 is equals to M2. From that, what I get? Minus A1 upon B1 is equals to minus A2 upon B2. Correct. This negative get cancelled. So we'll get the condition that A1 upon B1 is equals to A2 upon B2. This is the condition. Or same condition can be write as a A1 B2 minus A2 B1 is equals to 0. A1 B2 minus A2 B1 is equals to 0. This is the first case. Case 2. Case 2. Lines L1 and L2 are are perpendicular are perpendicular. Therefore, M1 into M2 is equals to minus 1. As we seen yesterday, the condition for the perpendicular lines is nothing but their product of a slope is becomes minus 1. Now, M1 has value minus A1 upon B1 and M2 has value minus A2 upon B2 is equals to minus 1. From that, I will get A1 A2 upon B1 B2 is equals to minus 1. After rearranging the terms, I get A1 A2 is equals to minus B1 B2, and this implies that A1 A2 plus B1 B2 is equals to 0. A1 A2 plus B1 B2 is equals to 0. Now we see next concept, solution of system of linear equation, system of linear equation in two variables, into variables. Okay. Now let understood one thing. What is the solution? Solution means we are going to find the point of intersection. We are going to find point of intersection. Okay, remember one thing that the lines either they are intersecting, yes, or either they are parallel like that, or one more thing, either lines are coincident. That means they are on a same line. These are the three conditions. We seen these three conditions. Okay, let's see. We are going to learn about these three conditions. First, let L1 A1x plus B1y plus C1 equals to 0 and L2
a2x plus b2y plus c2 equals to 0 has has first case a unique solution, a unique solution if a1 by a2 is not equals to b1 by b2. A1 by A2 is not equals to B1 by B2. Then it has a unique solution. And system of linear equation is and system of linear equation is consistent, is consistent. Second point, these two lines has no solution, no solution if A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Acha, remember this thing. A unique solutions means lines are intersecting. Lines are intersecting. Lines are intersecting. No solution. If A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. And and system of linear equation, system of linear equation is inconsistent. That is, lines are parallel. Acha, whenever we see that I get at least minimum one solution, then it is consistent. If we have no solution, then it system is called as a inconsistent. Okay. The third case, infinitely many solutions. Infinitely many solutions. If A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2 and system of linear equation is and system of linear equation is consistent and lines are coincident. Coincident means they are lying on each other only. They are lying on each other. Okay. One more thing, point of concurrent. Point of concurrent. When three or more lines, three or more lines intersecting, intersecting at a point, then that point is called, that point is called as point of concurrent. Point of concurrent. Okay, let's understood. If I have a family of lines, that means I have too many lines which are intersecting at a single point, which are intersecting at a single points, then these all lines are concurrent.
and this point is called as a point of concurrent. Okay. Acha. Now here we see it says that for three or more lines now. So if I say a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, and a3x plus b3y plus c3 equals to 0. These are the lines. These are the lines. Then, then condition for condition for point of concurrent is is simply we take the determinant of a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 is equals to 0. Is equals to 0. Okay. Yesterday we learn about sum theory. Today we learn about the sum theory. Okay. Now the last point is the equation of angle bisector. The last point is equation of angle bisector. After that, we remaining only with the distances formula. Okay. Now, what we are going? Equation of angle bisectors. Let's see. What is the equation? What I am saying. If this is a one line and this also one line, okay. These are the two lines. Say a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and a2x plus b2y plus c2 equals to 0. Then we have angle bisectors. These angles are there. Okay. Now we are going to find the equation of angle bisector. Equation of angle bisector. See that when I say angle bisector na, then it's more three lines are there. Then again we get the same condition like that, the point of concurrent. Okay. For that, the equation of angle bisector is given as a1x plus b1y plus c1 upon root of a1 square plus b1 square is equals to plus minus a2x plus b2y plus c2 upon root of a2 square plus b2 square. These are the conditions. This is the equation of a this is the equation of a line. Okay. Equation of a line which bisect the two lines, angle between the two lines. Now, let's see about the distances formula. Distance of a point from a line. See, this is a line which has the equation ax plus by plus c equals to 0. And I want a distance of point P, say x1, y1. The distance of a point P from this line, say D. D is the distance. Then D is given as D is equals to mod of
Just substitute this point in this line. So you will get ax1 plus by1 plus c upon root of a square plus b square. You will get that distance of a point from a line. For further that, this point this point is called as a foot of perpendicular. Foot of perpendicular. Let's see, foot of perpendicular is x comma y. Now, to find foot of perpendicular, to find foot of perpendicular, we use this simple trick that x minus x1 upon a is equals to y minus y1 upon b is equals to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square upon a square plus b square. This is the formula to find the foot of perpendicular of a point on a line. Foot of perpendicular of a point on a line. See here, I know the values of a, b, c. I know the value of x1, y1. I have to find the value of x and value of y. That values of x and y is known to be foot of perpendicular. The next concept is image of a point with respect to line. So the concept of image is very important, as the if this is a line, I want a image of a point, see this, then we know the concept of an image that it follows the same distance. That means how much it is from the base, the image will occur at the inside that mirror at the same distances. Means if this distance is d, then this distance is also d. P is called as a x comma y, and sorry, x1 y1. P is called as a x1 y1, and say q is called as a x dash y dash, x dash y dash, and this is the image of image of p with respect to line. Okay, here the equation of a line is ax plus by plus c equals to 0. Then what we will get? X dash minus x1 upon a is equals to y dash minus y1 upon b is equals to minus 2 times ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. This is the formula for to find the point of image with respect to line. This is the this is the shortcut to find image of a point with respect to line. Mhm. Okay. Where are they? Where we go? Let's see. This is the end of chapter. So now we are going to see some questions. Let's see the question number first. Question number first. Find the angle between the lines. Find
the angle between the lines x minus 2y plus 3 equals to 0 and 3x plus y minus 1 equals to 0. Option A 30, option B 45, option C 60, and option D 75. Yes. Yes, anyone? Yes, anyone? Let's see how to solve this one. See, the first line is x minus 2y plus 3 equals to 0. So I say the slope of this line is m1. So the how to find the slope of in the general equation? Negative of coefficient of x upon coefficient of y. So it is 1 by 2. Negative of coefficient of x upon coefficient of y. Here coefficient of x is 1 and coefficient of y is minus 2. And the second line is 3x plus y minus 1 equals to 0. So we have the slope of this line as a minus of 3 upon 1, which is equals to minus 3. Now I have the slopes. Then we use the formula for tan theta, angle between the lines. What is the formula? M1 minus M2 upon 1 plus M1 M2. This is the formula. We substitute the values. M1 is 1 by 2 minus M2 is minus 3 upon again 1 plus 1 by 2 into minus 3. Correct na? So after rearranging the terms, it becomes 1 by 2 plus 3 upon 1 minus 3 by 2. What is the remaining over? 2 3s are 6. 6 plus 1, 7 by 2 upon 2 minus 3 is minus 1 by 2. So options are again wrong, I think so. Yes, sir. X plus 3y minus 1 equals to 0. Yes. The second equation is x plus 3y minus 1 equals to 0. Now calculate it. So this slope now is how much? Minus 1 upon 3, which is equals to minus 1 by 3. We substitute the values minus 1 by 3
That means here it's 1 by 3. Here again minus 1 by 3. So you will get 1 minus 1 by 6. Okay, recalculate over 5 by 6 upon 5 by 6. So it becomes 1, na? 1. So it is 1. Then tan theta is 1 at what value? Theta is equals to 45 degree. So the answer is option B. Answer is option B. The equation of a line is x plus 3y minus 1 equal to 0. X plus 3y minus 1 equals to 0. So we learn about a distance of a point from a line, but not a distance for two parallel lines. Na? Let's see. Distance between two parallel lines. So the distance between two parallel lines, let L1 AX plus BY plus C1 equal to 0 and L2 AX plus BY plus C2 equal to 0. Also remember one thing, if the lines are parallel now, then and we have to find the distance between them, then the first thing which is very important is that the coefficient of x and y in both the lines is same. In both the lines is same. So I'm writing like that x plus by, x plus by. And the constant are differ. Then they are only the parallel lines. Okay? If these are the parallel lines and I want to find the distance between them. See, this is the one line and other line is like that. And we are going to find the distance between them, a perpendicular distance between these two lines. Okay, between these two lines, where this line is ax plus by plus c1 equal to 0, and this line is ax plus by plus c2 equals to 0, and this is the d. Then d is equals to mod of c1 minus c2 upon root of a square plus b square upon root of a square plus b square. This is the distance between two lines. One more concept is there in a straight line, which will ask in a competitive exams. The concept is like that we have to find ratio to find ratio in which the given line divide the line segment of given 2 points. Let's understood this concept first. What I am going to say here. Okay. Let's see. There are 2 points. Say this is the point P with coordinates x1, y1, and another point Q with coordinates x2, y2. Then they are, this is a line segment. Okay. This is a line segment. Now there is another line which intersect these line segment at a point say R, and the equation of the line is ax plus by plus c equals to 0, and the point R divide P and Q as k s to 1 ratio. Okay,
The line divide the line segment in the ratio k is to 1. Now we have to calculate the value of k. We have to calculate the value of k. So for that, I have a shortcut directly. What we are doing, we are substituting this point in this, and negative sign we are given extra, minus of ax1 plus by1 plus c upon upon ax2 plus by2 plus c डायरेक्टली. ठीक है. फिर यहाँ पे एक कंडीशन ये है बच्चों, दिमाग में रखो ये एक कंडीशन. क्या है कंडीशन? इफ रेशियो इज पॉजिटिव, रेशियो इज पॉजिटिव, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन. इफ रेशियो इज नेगेटिव, एक्सटर्नल डिवीजन. ओके. Again for the same, say point P and point Q with coordinates x1, y1 and x2, y2. Okay, it has the line segment, and it divides it divides the x-axis. It divides the x-axis. We need a line to divide now. X-axis is also a line. So I'm saying that it divides x-axis. It divides the x-axis in a ratio. In ratio. Mm, no, no. I'm not saying like that. It doesn't divide x-axis. If these are the points, then x-axis divides the line segment. X-axis divides the line segment in a ratio, in ratio minus y1 upon y2, and y-axis divides the line segment in the ratio minus x1 upon x2, minus x1 upon x2. Question number 2. Okay. Find the equation of a line. Find the equation of a line passing through the point passing through the point 1 comma minus 2 and parallel to the lines and parallel to the line 2x minus 3y is equals to 7. I will I will give you a shortcut for that. I will give you a shortcut for that, which is very simple to find the equation of a line parallel to a given line. Equation of a line parallel to a given line.
Just first you do it. What is the answer? Let me know. What is the answer? Sir, A. A is the answer. We don't need to solve Yes, sir. this now, as we just see the slope. Slope of this line is minus 2 upon minus 3, which is equals to 2 upon 3. Its slope is 2 by 3. Its slope is minus 2 by 3. Its slope is minus 3 by 2. And its slope is 3 by 2. For the parallel line slope are same now. So the option A. Don't need to go to solve and so many things. You just check that and you will get the answer. Sir, Yes. sir, one formula is that distance from a point to a parallel line. No, no, no. That same formula is this only. Uh, yeah, this one. Distance of a point from a line. Okay, You are sir. saying the same or anything else? No, no, I'm saying the same, sir. Yeah. Okay. Now we go for the general aptitude. Yesterday we learn about the number coding, na? Yes, sir. Today we are going to learn about the distance and direction sense test. Distance and direction sense test. Hello, sir. Just a minute. What? Huh? Sorry, what, Sorry? sir, what is the last step to find? To find? Sir, slide down. I'm doubting the formula of point from a So you are line. writing this only. Yes, sir. To find foot of perpendicular, I don't understand it. Acha, listen. Whenever I draw a perpendicular from a point to a line, okay, we get a point on that line. Yes or Foot, no? foot of. That point is called as a foot of perpendicular. A point on the line, a point on the line from which we draw a perpendicular to the P. Okay. Or we say that a perpendicular from the P we draw, and this perpendicular is on the line at point Q. Then this point Q is called as the foot of perpendicular. To find this point, we use this formula. X minus x1 upon A is equals to y minus y1 upon B is equals to minus of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square. Okay, sir. Okay, Okay, sir. let's see now. We are going to learn about distance and direction sense.
तुम्हारे पढ़ते बैठो चलो. ओके लिसन नाउ. हम लोगों को एक वर्ड याद है, न्यूज. उसको इस तरह से याद रखना, जिग जैग, है ना. डायरेक्शन सेंस के लिए इजी ट्रिक है. न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ ईस्ट. दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ वेस्ट. दिस इज द साउथ वेस्ट एंड दिस इज द साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ, लाइक दैट ओनली. ओके. We always write like that. News, NEWS, news only. ठीक है. साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट. These are the also direction. So we have 8 direction sense. We have how many direction sense? 8. According to that, what we consider, always the first thing is every object, every object is perpendicular to the earth. That is our assumption. Okay. And if I draw like these lines are always perpendicular like this. Just a moment. Here NEWS, news. And this is the line which makes 45-degree angle. And this is also a line. Okay. So we are consider it as a northeast and this is a northwest and southwest and southeast, like that. Okay. Now this diagram we have to remember, according to that we are going to left, right, forward, backward. Only we understood from this only. Okay. We start our object at the origin. This is called as the origin, and we keep our object always there. Object is there, who is moving. And the direction has two sense. One is clockwise and another one is a anti-clockwise. It will mention either it is a right turn or left turn, like that only. Okay, we are going to clockwise or anti-clockwise. Acha, sun rises at where? Sun rises at East, sir. east, na? Here sun, na? So in the morning the shadow is at west. In the morning the shadow is at the west, and in the evening the shadow is at the east. And at the mid afternoon we consider that there is a no shadow. We consider, there is a shadow which is a very small, but we consider that there is a no shadow at a afternoon, exactly noon. Okay. To solve this type of a question, just understood that we need to draw the first diagram. After that diagram, now we will use all the answers. Means we are able to answer all the questions if we draw the diagram. To find the distance, now we have two things.
One is distance and another one is a displacement. Do you know what is the difference between the distance and displacement? What is the difference between the distance and displacement? Distance is the length of actual path followed by followed by an object is called as a distance, and displacement is the minimum distance between initial and final position of object is called as a displacement. It's called as a displacement. Okay. To find this distance and displacement, we need one more formula called as a Pythagoras theorem. Do you know about the Pythagoras theorem? If this is A, B, C, this side is of a length B, this side is a length of A, and this side is of a length C, then what you will get by Pythagoras theorem? Yes, by Pythagoras theorem, what you will get? B square is equals to A square plus C square. We say that the sum of square of other two sides is equal to the square of hypotenuse. Square of hypotenuse of a right angle triangle is equal to the sum of square of other two sides. Sum of square of other two sides is called as a Pythagoras theorem. Let's see the first question. A man walks, a man walks 5 kilometer north, then turns right, then turns right and walks 4 kilometer. Walks 4 kilometer. He then turn right again. He then turn right again and walks 5 kilometer. And walks 5 kilometer. In which direction is he facing now? In which direction is he facing now? Why again? North, south, east और वेस्ट? बोलो क्या आंसर आया? इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो, डायग्राम बनाएंगे. इफ यू ड्रॉ द डायग्राम देन इट इज इजी टू सॉल्व, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट. Sir, east. ईस्ट, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन नहीं होगा. नहीं नहीं. Sir, south. South is the correct answer. See here. I'm start my journey from this point, say origin. I walk 5 kilometer
towards north. Here north, east, west, and south. Correct. After that, I turn right and go for 4 kilometer. After that, again I turn right and go for 5 kilometer. Now my face is in this direction, na? So the direction is south, north, east. Are you getting? Yes, sir. Okay. Let's see in the next question. Question number 2. Just a moment. Starting from point A, starting from point A, Ravi walks 10 meter east. Ravi walks 10 meter east. He then turn left. He then turn left and walks 5 meters. And walks 5 meter. He again turn left. He again turn left and walks 10 meter. How far is he from? Is he from point A? Options 5, 10, 15, 20. डायग्राम ड्रॉ करो आ जाएगा. ड्रॉ द डायग्राम. Sir, 5 meter. 5. करेक्ट करेक्ट. आया क्या दूसरों को? सर आई हैव अ डाउट। हाँ. सर इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट? देखो जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोला ना डायरेक्शन सेंस में, then we are always find the shortest one only, and it asks from the point A na. It doesn't ask all about the journey, so we have to find the shortest. If it asks about the journey, then we have to add the all the things. If it doesn't ask about the journey, then we just go for the distance from the point A. 10 meter east here, then turn left. If I get a left turn, then we go for the north, na? North. It's 5 meter. Okay. Then again turn left and walks 10 meter. 10 meter, turn left. Now he is at a distance of this now from A. From A, it is a distance of 5 meter. If it is asked about the total journey, then answer is 25. Got it? यस सर। It asks from the point A, so the answer is 5 meter.
Sorry. Remember one thing, in the question now it will mention what to find, the shortest distance or the distance followed by in a journey or anything else. Okay, it will mention in the question only. Let's see question number 3. Question number 3. Priya walks 8 kilometer west, then turn right and walks 3 kilometer. The she then turn right again. She then turn right again and walks 12 kilometer. How far is she from the starting point? How far she is from the starting point? And in question it is mentioned that shortest distance, shortest distance we need. Option A 4 kilometer, option B 5 kilometer, option C 7 kilometer, and option D 15 kilometer. What is the answer? So option A, 4 kilometers. Okay. Option A 4 kilometer. It is again very Yes, simple sir. one. You go for the same. Say Priya, it this as at this point. I'm drawing the direction since NEWS news. She started her journey in the direction of west and goes for 8 kilometers. Okay, this is the 8 kilometer. After that, she turned right, right. Then it goes for the north, na, and walks for 3 kilometers. Okay, this is 3 kilometer, and then she turn right again, turn right, and walks about 12 kilometer. See that if this is 8, na, this is also 8, this is 3, this is 4. We need the shortest distance, na. Then the shortest distance is this. So this is 3, 4. Then this becomes a 5 kilometer. So the answer is option B. Are you getting my point? If I need the starting point from the P point, I need the shortest distance. Then it is asking about the Pythagorean triplet only. Remember that. And we are taking the lines are a parallel, na. So the distance between the parallel lines is same. Though this is the 3 kilometer, this is also 3. This is 8. So this distance is also 8. So the answer is option B, not 4 kilometer. It's 5. Understood? Yes, sir. Okay. Let's see. Next, question number 4. A person starts walking towards, a person starts walking towards south. After walking, after walking
15 meters, he turns left. He turns left and walks 20 meters. He turns left again. He turns left again and walks 15 meters. How far and which direction? How far and which direction? How far and which direction is he from the starting point? Is he from the starting point? Option A 30 east, 30 meter east, 30 meter west, 20 meter east, 10 meter west. C option, sir. Option C option. C 30 Sir, meter. none of these. None of these. Yeah, there is no option, none of these. Let's see. Maybe question is wrong. Towards I'm south, not getting the answer, sir. after walking 15 meter. Okay, let's see. He started the journey here. N E W S. At the start, a person starts walking towards south. It's starting towards south and goes for 15 meter. After that, turns left. If it turns left, it goes to the east. Okay, and walks for 20 meters. Okay. After again, it turns left and walking for 15 meters. Hmm. So he is in the direction of east Not. and 20 meter. Correct, Anna? C option is the correct. 20 meter east. Sir, but direction will be north. No? Why? No, no, no. It is asking the direction sense for the starting point. Na? See na. Okay, And sir, which I got it. direction is he from the starting point? Na? It is not asking about his final face towards which, okay, he is facing. It is Okay, asking okay then. from the starting point the direction of that person. Okay, sir. And I'm finding the face, the person would be face Hmm. in the north. No, no. Face could be the in the north only. From the starting point, he is at the east. Okay, sir. Okay. Hmm. Just a minute. Ah, write down the next question. Question number 5. It is very interesting one. Point P is point P is 10-meter west of point Q. Point P is 10-meter west of point Q. Point Point R is
south of point Q. South of point Q. Point S is 15 meter east. 15 meter east of point R. Point T is 10 meter north. 10 meter north of point S. What is the direction of what is the direction of T with respect to P? Option A north, option B southeast, option C northeast, and option D south. Yes. Acha, one more thing you have to remember that it will ask the direction of T with respect to P na. So we firstly fix the point P. Firstly we fix the point P. Acha, P is the 10 meter west of Q na. Acha, abhi listen carefully, yeah? Listen carefully. This is the news NEWS. Then it is the west of Q means Q is that sign, and this is the west of Q, and this is the 10 meter. Do you got it what I am saying? Yes, sir. P is a 10 meter west of a point Q. Point R is south of point Q na. So south of Q is this. So it is R there. Okay. And point S is 15 meter east of R. So it is 15 meter, 15 meter and east. East. This is the point S. After that, point is 10 meter north of point S. This is 10 meter na. Point T. Then what is the direction of T with respect to P? Yes. You don't know about the distance between the Q and R na. Point R is south of a point Q. Yes. Then what is the answer? We check this with respect to P, NEWS. So T should be in this region. T should be in this region. NEWS. Sorry. WS.
So T should be in this region, and this region is nothing but the southeast. This region is nothing but southeast. So answer is option B. Answer is option B. For any direction sense question, now you go for the diagram. After the diagram, you will get the answer easily. Okay. Yes or no? Okay. Let's see. Now it's your chemistry class. We'll see the questions tomorrow. So ma'am, make please make the host to the Anispedia, co-host to the Anispedia Education Support Services. Hello. बच्चे देखने कैसे शेयर करना पड़ेगा ना ऑलरेडी शेयरिंग है एक से उसको शेयर करके देखते हैं शेयर Okay, good morning, everyone. Good morning.
Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay. Hi. So what we have done yesterday, we have seen about the solubility. Okay. Till now, what we have done, we have seen the solutions, its types of solution, concentration terms, solubility, factors affecting solubility, and then now we will start vapor pressure. Okay, and Rawls law. Have you done it yesterday? Yes, ma'am. Okay. So we have done a vapor pressure. We have done vapor pressure. Okay. कैसे क्यों हो रहा है? Vapor pressure. Okay. And do you know what is vapor pressure? Vapor pressure is the pressure of saturated vapors exerted on the surface of solution. Right? Then we have seen the Rawls law. Do you remember Rawls law? What is Rawls law? Yes, anyone? Did you understand Rawls law? Rawls saying Rawls law is what? See, we have seen yesterday that the when we make a solution, okay? When we make a solution of solute plus solvent, yeah, when we add solute and solvent and make a solution, right? So we consider solute as A2, solvent as A1. Okay? When we mix it, it is a solution. Okay? Now in the solution, the pressure is like the we will say that P1. P1 is the what is P1? It is a partial pressure of solvent one, component one in solution, right? And P naught one is what? P naught one is it is the vapor pressure of pure component, vapor pressure of pure component one. Okay? Pure component one means what? When there is not any solute is added. It's just a component one. Okay? For example, water and alcohol. When only water is there, it is called pure component water. Okay? And the vapor exerted by the water is the P naught one, yeah, P naught of water. Right? Now, according to Rawls law, it states that the partial pressure of any component is the multiple of vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction. Okay? We have seen it yesterday. We have seen this formula yesterday. P1 is equal to P naught 1 x1. And then we have seen the graph. Remember the graph? This was the graph of Rawls law. Okay. Here x1 is equal to 1, x2 is equal to 0. Here x1 is equal to 0 and x2 becomes 1. Then the vapor pressure of the component is pure. Okay. It is P naught 1.
And what happens? Pressure is directly proportional to the mole fraction. So it will go down like this. Okay. And for here it is P naught 2, vapor pressure of pure component 2, because x1 is 0 here. So the graph will be like this. And in the solution, it is like this. Okay. So in the solution, it is P1, it is P2, and total PT. And according to Dalton's law, PT is equal to P1 plus P2. Okay. This is the graphical representation of Rawls law. What is this? This is the graphical representation of Rawls law. Are you getting this? And here, this explains the vapor pressure, and this axis shows the mole fraction. Okay. Is that clear? Clear to everyone? Any doubt? Yes? Come on. Should we go proceed? Okay, please reply me. Are you having any doubt here, or should we proceed? Yes, ma'am, no doubt. Yes? Angad Singh, what you said? Yes, ma'am, no doubt. I'm not getting you what you have said. Angad, Yes, ma'am, no doubt. okay, okay. Now next is our, we have to see the ideal solution and non-ideal solution. Okay? Ideal solution and non-ideal solution. Okay? Ideal solution is what? Which obeys the Rawls law. Okay? Which obeys this graph, this law exactly. Okay? Ideal solution which obeys Rawls law. Okay? Second thing, here the interaction, important part is what? Interaction between the solute, solvent, and solvent are all the same. Okay? Similar interaction between solvent, and solvent. Okay? You can say like this, okay, the interaction between solute, solute, solvent, solvent, and solvent. Okay, are same. They have same interaction between all the particles. Okay, but in case of non-ideal solution, they do not obey Rawls law. Okay, and here the force of interaction, FOA. FOA is what? It is the force of attraction, or you can say force of interaction, FOI. Okay, whatever is not same, is not same for solute, solvent. Okay, and solvent. Okay, here the interaction of force is not same. That's why they show they do not obey Raoult's law. Their pressure may be higher or lower than the normal. Okay. If they are obeying the Raoult's law, it means they have same interaction. It means there is no enthalpy change. Delta H mixing, you can say delta H mixing is equal to 0. Delta H is the enthalpy change.
It means what? The energy required. Energy required to break. Suppose we have two components, 1 and 1. Okay, in components 1, 1. Other component is having 2, 2. Okay, to break the energy required to break this component 1, 1 and 2, 2. Okay, and we get what? We get the solution 1, 2. Okay, so for the formation of 1, 2. Okay, here is the formation. The energy required to break the bond, to break the intermolecular force of 1, 1 and 2, 2 is exactly same the energy released during the formation of 1, 2. Understand? The energy, that is, you can say the energy absorbed, energy absorbed to break intermolecular force, intermolecular force is equal to energy released. Energy is released when any interaction is developed. Okay, energy released. Okay, so no net loss of energy is there, no net gain of energy is there. Understand? Delta H mixing is equal to 0. And here delta H mixing is not equal to 0. It may be more than 0, it may be less than 0, depending upon the type of interactions. Okay. Next part is delta V is equal to 0. Means because the interaction are same, the particles with the distance between the particles remain same and the volume remains same. Okay. And here delta V is not equal to 0. Got it? Now we will see their examples which are very important for the point of exam. Okay. Before that examples, we'll discuss about non-ideal solution. Okay. Now let's see non-ideal solution. Non-ideal solution. Okay. It is of two types. It may be positive deviation and it may be negative deviation. Okay. It can show positive deviation and it could be negative deviation. Okay. Positive deviation means what? In the Raoult's law graph. Okay, this is the Raoult's law graph. Okay, here we have seen the graph like this. Okay, but in positive deviation, the graph will become like this. Okay, is that clear? The paper pressure is little higher than according to Raoult's law. Okay, vapor pressure. This is the P1. This is P2 and this is PT. Vapor pressure is higher than normal pressure. Okay. And in the case of negative deviation, vapor pressure is lower than Raoult's law. Okay. This is P1, this is P2, and this is PT. Right. Now, what is the reason of this? Why their vapor pressure is lower and their vapor pressure is higher? Okay. See, in positive deviation, vapor pressure, okay, is higher. That is visible in according to Raoult's law diagram. Vapor pressure is higher. Okay. Vapor pressure is what? Vapor pressure is the pressure exerted by the vapor, and vapors are formed when the molecules of liquid escapes. Okay, when the molecules of liquid escapes, and when it escapes, when the intermolecular forces are weaker. Okay, more vapor pressure means what? More vapors are forming.
more vapor pressure, it means more vapors are forming. And when vapors are formed, when there are a weaker intermolecular force. Understand? Okay. So here what? Here a solution which is formed, solution has weaker, okay, weaker intermolecular, weaker intermolecular attraction between solute and solvent. Okay. It means what कि solution का जो intermolecular attraction है that is weaker than solute and solvent. So a weaker intermolecular attraction which results in the easily escape. Okay, that is why they easily escape to the vapors and vapors become higher. So they exert higher vapor pressure. Okay, and in this case, in negative, vapor pressure is low. Low vapor pressure, as it's seen, vapor pressure is lower. Okay, because of what? Because the solution has stronger has a stronger intermolecular attraction between solute and solvent. Okay, is that clear? If the interaction is stronger, okay, if the interaction is stronger, then the molecules escape little low. Okay, then the formation of vapor will be lower, so they will exert a lower vapor pressure. Okay, now see here. Now you can you give the answer if the solution has weaker intermolecular force means they with intermolecular force are weaker. Okay, so what will happen? Delta H mixing enthalpy change should be what? Delta H mixing should be higher than 0. Means the formation, the energy required to break the bond is higher than the energy required to form the interaction forming. Means the energy required to breaking energy is higher than the energy required in the formation of solute solvent. Not. Okay. Are you getting this point? Delta H mixing is greater than 0. Okay. It means what? The 1 for the breaking of 1 and 2 is higher than the formation the energy released during the formation of 1 2. Okay. It means what? Is it endothermic or exothermic? Delta H mixing is greater than 0. It means it is endothermic or exothermic. What will you say if a question is asked during the positive deviation? The reaction is endothermic or exothermic? Energy is absorbed or released? Yes, what you thought? Yes, Angad. What should be the answer? Is it endothermic or exothermic? Yes, sorry, I'm not getting. Endothermic or exothermic? Yes, please. I did not get the answer. Please give me answer.
Yes, please. Delta H mixing is greater than zero. It means it is endothermic. Okay. The more energy is absorbed than the energy released in the formation. Okay. And delta V mixing is also zero. Delta V means the because it is a lesser, weaker intermolecular force. The particles are far apart and they will acquire a greater volume. So delta V, the volume change is also more than zero. Okay. And in negative deviation, what happens? Delta H mixing. Okay. Enthalpy change is less than zero. It means what? The solute solvent interaction is greater. So they release more energy. So energy is released here. So it is exothermic. And here it is endothermic. Okay. And it is exothermic. And also delta V is lesser than zero, means because the intermolecular force are stronger, particles are closer, and their volume becomes lesser. Okay. So if you will mix a 20 ml solute and 30 ml solvent, okay, maybe you will get a solution lesser than 50 ml. Okay. Is that clear? Okay, now very important part is their examples. Okay. Questions are asked frequently from the examples. Okay. Now examples of first example of ideal solution. Okay. Examples of ideal solution. This is the most important part of this. So what we have seen in ideal solution, ideal solution, the interaction should be same between solute and solvent. Okay. So the examples of, yes, example are of the same type of molecule. Okay. For example, yes, benzene and toluene. Benzene and toluene. Both have almost both have almost same interaction, same structure. Okay. Yes, one thing you should remember here, that the ideal solution should be the solution of two components which should have same type of interactions. Same interaction will be there if they have same polarity, same size, almost same size. Okay. Size का difference ज़्यादा होगा. If there is more difference in size, the van der Waals force will be different, and so though they will have different intermolecular attraction. Okay. So size should be same, polarity should be same. Okay. Next is N-hexane and N-heptane. Okay. Both have almost same size, same polarity, same structure. Okay. Third, bromobenzene, bromobenzene, and what? Chlorobenzene, chlorobenzene. Okay. Same structure, almost same size, chloro and bromo. Okay. And you can say anything or uh, methanol, methanol, and ethanol. Okay. This could also be the example because both have almost same structure, same size, same polarity. Okay. Now some examples of positive deviation. Examples of solution with positive deviation. Okay. Here, what we have to see, that the solution should have lesser intermolecular interaction. Okay. There should be the weak interactions between solute and solvent. Okay. So examples should be like this.
with acetone and carbon disulfide CS2. Okay. Here, what happened? Here, the interaction between acetone and CS2 is weaker than acetone and CS2. Okay. So weaker interaction between acetone and CS2, weaker interaction between acetone and CS2. Okay. lead to higher leads to higher vapor pressure. Okay. Than expected. Okay. That's why they show positive deviation. Okay. Other example, wherever you will get something like their interaction is weaker than the solute and solvent. This is example of positive deviation. Okay. ethanol and water ethanol and water. Here also the interaction between ethanol and water is more than the interaction between ethanol and water. Okay. Third, acetone and benzene. Acetone and benzene. Okay. Both have different type of polarity. So the interaction between acetone and benzene is weaker than normal acetone and benzene. Okay. Now some examples of negative deviation. Okay. Examples of solution with negative deviation. Okay. Here what should be the of interaction should be higher between solute and solvent. Okay. The example is like chloroform and acetone. Chloroform CHCl3 and acetone CH3COCH3. Okay. Here what will happen? They develop a hydrogen bonding. Okay. What will happen here? Let's see the example of this CHCl3. Cl is like this Cl and Cl. Okay. Here's H. Okay. Because Cl is electronegative element, electronegative. Okay. It will attract and it become little positive and they are little negative. Okay. So the hydrogen becomes little, it attract from hydrogen, so it become little positive. Okay. And in this side, COCH3, CH3. Okay. So one type of hydrogen bond developed between these two. Okay. And this hydrogen bond is stronger enough. Okay. Hydrogen bonding is developed, which holds these molecules little more stronger. So they have little tendency to vaporize and they show negative deviation. Okay. Other example is how will you identify the negative deviation example? Wherever you find something like hydrogen bonding type interaction between solute and solvent, that is the example for negative deviation. Okay. The example of other example is nitric acid and water. Here also hydrogen bond developed between nitrogen and oxygen. Okay. Third is acetic acid and pyridine. Acetic acid and pyridine. Mhm. Strong interaction uh, between pyridine and acetic acid due to the hydrogen bonding developed between nitrogen and oxygen of these molecules. Okay. Is that clear? Examples. So the most of the questions are asked from the examples only. Okay. And you have to choose the example very carefully, that what type of interactions developed in the solution between solute and solvent. Okay.
See, in positive deviation, weaker interaction between solute and solvent. Okay. And in negative division, there is some stronger interaction. There may be some hydrogen bonding is developed between solute and solvent. Okay. Is that clear to everyone? Please let me know if any problem is there. Okay. Now, our next topic is colligative properties. Okay. Our next topic is colligative properties. This is also a very important topic, colligative properties. Okay. See, colligative properties are of generally non-volatile solute. Okay. Colligative properties of non-electrolyte, non-electrolyte solution. Okay. Till now, we were discussing about the binary solution of two volatile liquids. Okay. Now onward, we'll discuss about the two about of the solution of in which one component is solid and other component is liquid. Understand? Here we are going to discuss the solution, binary solution, okay? Binary solution of a solute which is non-volatile, means solute. Okay. The colligative properties are those properties which are which depends on the number of solute and not on their nature. Okay. Those are the physical properties. These are those physical properties that depend on number of solute particles and not on their nature. Right? The colligative properties are those properties that depend on the number of solute, amount of solute, but not on their nature. For example, if you are adding a 1 gram of salt and 1 gram of sugar, both will show the same properties because they have the same amount. It doesn't depend on the nature of solute, right? So here there are four types of colligative properties which we have to discuss later on. And these are relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure. Okay. Elevation in boiling point. Elevation in boiling point. Depression in freezing point and osmotic pressure. Right. So these are four colligative properties which we have to discuss in detail. Okay. Tomorrow we'll discuss these topics. Now it's your physics class. Go ahead, physics. Okay. Till then, bye. कौन से बुक रेफर कर मैं
गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर। हाँ, गुड फिजिक्स के मॉर्निंग अंदर सर। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बताओ जरा मुझे। हेलो। हेलो बच्चों, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे थे बेटा फिर? सर ऑप्टिक्स। कितना हुआ था? अच्छा, वो जितना मैंने पढ़ाया था उसके बाद किसी ने नहीं पढ़ाया क्या फिजिक्स? नो सर। अच्छा, ओके, ठीक है। एक मिनट, मैं बुक मंगवा लेता हूँ। हेलो। हेलो। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स में। लास्ट टाइम मैंने फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, उसको इमीडिएटली रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि मिरर्स के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, R/2। क्योंकि कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में फोकल लेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो फोकल लेंथ अगर मिरर्स का कैलकुलेट करना चाहते हो फॉर्मूला रहेगा R/2। अगर बेटा आप लेंस यूज कर रहे हो तो लेंस के केस में फोकल लेंथ का फॉर्मूला बहुत लंबा चौड़ा है। हमने आपको लास्ट टाइम डिस्कस करके बताया था, इट इज N2/N1 -1 1/R1 -1/R2। इस फॉर्मूले का नाम है, इस फॉर्मूले का नाम जो है, मैंने क्या बताया था, इस फॉर्मूले का नाम लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूले को हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला कहते हैं, और ऊपर वाले फॉर्मूले को फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कहते हैं। ये दो फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग लेंसेज एंड मिरर। और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब भी आप ऑप्टिक्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने या लेंस के सामने रखोगे, उसकी इमेज बन जाएगी। और वो इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज गिवन है। इसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना है हमें। देखो, अगर मिरर के केस में, पहले मिरर डिस्कस कर लेते हैं। मिरर के केस में आपको अगर दिया हो, कोई भी मिरर हो, मैं पहले अज्यूम कर लेता हूँ कि कॉनकेव मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर रहेगा तो मैं बता चुका हूँ कि उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट साइड होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आई मीन लेफ्ट साइड होता है। तो इसीलिए बेटा, जब भी आपको कॉनकेव मिरर दिया रहेगा तो एक बात ध्यान रखना है, आप लोग इसको नोट डाउन करो प्लीज। कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ इज ऑल्सो नेगेटिव एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो
नेगेटिव। अच्छा, कॉनकेव मिरर को हम लोग कभी कभार कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। व्हाई इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर? बिकॉज इट कन्वर्जेस द रेज, है ना। कॉनकेव मिरर को कभी कभी क्वेश्चन में कन्वर्जिंग मिरर भी कहेगा। तो रिमेंबर, कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस द रेज, देयरफॉर इट इज कन्वर्जिंग इन नेचर। ऑल्सो अगर हमने ये जो है कॉन्वेक्स मिरर बनाया, तो कॉन्वेक्स मिरर में अगर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखने जाऊं मैं, तो आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर में पोल यहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ट्रीट की जाएगी, क्योंकि वो राइट साइड आ रही, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड आ रहा है, इसके लिए वो भी पॉजिटिव होगा। तो हम ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ और radius of curvature both are positive, and convex mirror is a diverging mirror. Always remember बच्चों, convex mirror is a diverging mirror, therefore कभी क्वेश्चन में अगर diverging mirror रहेगा तो हम convex mirror assume करेंगे। ओके, ऑनलाइन में जरा लेक्चर है, बात समझ में आई बच्चे लोग? तो जैसा कि आपने 3 टाइप के मिरर पढ़ा है, और तीसरा मिरर होता है प्लेन मिरर। दिस इज अ प्लेन मिरर। कौन बताएगा ऑनलाइन में, कौन बताएगा प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? पता है बच्चों, प्लेन मिरर इतना फ्लैट होता है कि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इंफिनिटी ले सकते हैं, बिकॉज प्लेन मिरर इज परफेक्टली फ्लैट। ग्रेविटी 10% से डिक्रीज हो रही ना, तो अगर कोई चीज 10% से डिक्रीज हो रही तो बची कितनी? खत्म। मतलब ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू 90% ऑफ इट्स वैल्यू एट ऑन द सरफेस। सर हम ऐसा नहीं कर सकते, एक लो जी को डिवाइड बाय 10%, जी/10, और दोनों को डिवाइड करें, एक सादा जी ले और दूसरा GH को लिखे जी/10। हाँ, तो देखो अगर तुमने जी को जी/10 लिया, हाँ, तो जी/10 से डिक्रीज हो रही ना, हाँ, तो जी माइनस जी/10 करना पड़ेगा बची हुई। हाँ, तो बची हुई ग्रेविटी कितनी आ गई? 9/10 इंटू जी, हो गया 90%। 90% हुआ, 90%। समझिए? वैसे करो, कैसे भी करो, कोई टेंशन नहीं। तो मैं बता रहा था प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेना होगा बेटा? इंफिनिटी, देयरफॉर फोकल लेंथ इज आल्सो इंफिनिटी। सो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर: कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। Concave mirror is converging mirror and its focal length as well as radius of curvature is negative. Convex mirror is a diverging mirror, its focal length as well as radius of curvature is positive. Plane mirror is neither converging nor diverging. प्लेन मिरर रेस को ना तो कन्वर्ज करता है ना ही डाइवर्ज करता है। प्लेन मिरर सिंपल प्लेन मिरर है, तो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों भी इनफिनिट अज्यूम की जाएगी। ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने अगर किसी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, तो लेट यू बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और v क्या रहता है? हमने ये फॉर्मूले 9th और 10th में भी पढ़ा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो मिरर फॉर्मूला बोलता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मिरर्स फॉर्मूला। यही फॉर्मूला अगर मैं लेंस के लिए लिखना चाहूंगा बेटा, तो फॉर्मूला बनेगा 1/v माइनस 1/u। ये फॉर्मूले का नाम रहेगा लेंस फॉर्मूला। याद रहेगा बच्चों? देखो क्या फर्क है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है बस। और लीनियर मैग्निफिकेशन में आप हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट करोगे। व्हाट इज एच आई बेटा? एच आई क्या है? हाइट ऑफ द इमेज, या फिर साइज ऑफ द इमेज भी कह सकते हैं। एच ओ क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट लो। एम का जो दोनों जगह फॉर्मूला एच आई बाय एच ओ रहेगा, एच आई बाय एच ओ, लेकिन माइनस वी बाय यू रहेगा मिरर के लिए, और प्लस वी बाय यू रहेगा लेंस के लिए। So you have to separately remember this formula. This formula is called as linear magnification. Linear magnification. क्योंकि हमें ये जानना होता है कि इमेज का साइज कितना है। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर इमेज का साइज डबल हो गया,
तो लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 2। ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से अगर इमेज का साइज ट्रिपल हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 3। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हाउ मच image is magnified, we will calculate linear magnification in case of mirror as well as lens। दोनों के लिए अपने को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंड दिस फॉर्मूला विल बी वेरी मच एप्लीकेबल फॉर द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला काफी ज्यादा एप्लीकेबल होगा, हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? चलो देखो, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करके बताता हूं मैं इसके ऊपर, किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो देखो, देखो ये बताया मैंने। अब देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा मैं। तो देख सकते हो बेटा, ऑब्जेक्ट से लेकर के, सॉरी, मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग यू कह रहे, देखो यू कह रहे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट से रेज वगैरह निकाल करके, देखो ये बन गई इमेज, दिस इज एन इमेज। तो ये इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से लेकर के इमेज तक के डिस्टेंस को वो वी कह रहा है, चेक करो। और ये हो गया तुम्हारा फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट तक की दूरी को वो एफ कह रहा है, चेक करो, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन है, क्योंकि ये मिरर है, तो मिरर के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1/f = 1/v प्लस 1/u, और लीनियर मैग्निफिकेशन होगा -v/u, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप लोग ध्यान में रखो, इन दो फॉर्मूले को लेकर के अपने को क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है बच्चा लोग। चलो अभी जरा ध्यान से सुनना, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, जोर से पढ़ो जरा। क्वेश्चन ये है, अ कॉन्वेक्स मिरर, बोलो बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव ट्रीट की जाएगी ना, और फोकल लेंथ एफ, तो मैं एफ को पॉजिटिव ट्रीट करूंगा, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज डिस्कस्ड हियर, फॉर्म्स एन इमेज which is 1/n times the object। मतलब hi is height of the image is 1/n times height of the object, यही गिवन है। दैट मीन्स hi/ho is equal to 1/n हो गया। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर बोला है। अब क्योंकि 1/n टाइम्स इमेज बन रही है, इसीलिए इन्वर्टेड इमेज बनेगी बेटा, सॉरी इन्वर्टेड नहीं, सॉरी इरेक्ट इमेज बनेगी, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। इसके लिए इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है? इसकी लीनियर मैग्निफिकेशन क्योंकि पॉजिटिव है, तो देखो hi/ho की वैल्यू 1/n ले लिया। डू यू नो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने बताया hi/ho, और साथ ही साथ -v/u भी बताया हूँ। hi/ho की वैल्यू मैं 1/n रखता हूँ, और -v/u एज इट इज। तो यहां से v का वैल्यू कितना बनेगा बेटा, -u/n, चेक कर लो, -u/n बन जाएगा। अब हम यूज करते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सॉरी मिरर्स फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f = 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f को एज इट इज रखता हूं, v का वैल्यू क्या गिवन है, -u/n, तो n ऊपर चला जाएगा, और प्लस 1/u एज इट इज। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप बनेगी 1/f = 1/u कॉमन आ जाएगा ना, 1/u कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 - n बचेगा, चेक कर लो, ठीक है। तो इसको रेसिप्रोकल करते हैं, f = u/1 - n बचेगा, दिस इज माय आंसर, ठीक है। एक्चुअली u फाइंड करना था, सॉरी u फाइंड करना है, तो हम लोग u की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। u की वैल्यू बन जाएगा f टाइम्स 1 - n, हाँ क्वेश्चन में u पूछा है ना, तो u की वैल्यू आ जाएगी f टाइम्स 1 - n। अच्छा 1 - n क्यों नहीं है यहाँ पर,
n-1 क्यों है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे ना, ओके। साइन कन्वेंशन भी यूज कर लिया है यहाँ पर। रुको एक मिनट, साइन कन्वेंशन भूल गए ना हम लोग। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, यस यस यस। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, यस। तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 1 - n, देखो फिर से करके बताता हूँ मैं, 2 मिनट दो, फिर से करके बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एच आई इज इक्वल टू 1/n टाइम्स एच ओ लिख दिया। तो यहां से एच आई अपॉन एच ओ आ गया 1/n। अभी लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई बाय एच ओ भी है और -v/u भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज इरेक्ट इमेज बन रही है। इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। तो एच आई बाय एच ओ की वैल्यू मैं 1/n पुट करता हूँ, और माइनस एज इट इज, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा बेटा। v इज इक्वल टू u/n वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम लोग ये वाले फॉर्मूले में रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट टाइम मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूँ। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस u/n है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -u है। आप देख सकते हो 1/f इज इक्वल टू 1/u कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में n-1 बचेगा। तो यहां से u की वैल्यू f टाइम्स n-1 बनेगा। देखो बच्चों ध्यान से देखना, आंसर आया है। लेकिन पिछली बार आंसर इसलिए नहीं आया था मेरा, क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया था। आपको ये बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, अगर आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे ऑप्टिक्स के आंसर्स रॉन्ग होंगे डेफिनेटली। तो प्लीज रिमेंबर, वी हैव टू ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन इन द फॉर्मूला इन द क्वेश्चंस ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर हम लोग को न्यूमेरिकल के अंदर हमेशा फॉर्मूला में साइन कन्वेंशन के साथ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। अदरवाइज आवर आंसर विल गो रॉन्ग। ओके बच्चों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। लिया सबने स्क्रीनशॉट लिया? ठीक है बेटा, यस। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर अ कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बोला है? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज अ कॉनकेव मिरर। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। इमेज इन्वर्टेड बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट्स इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो होगा ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज का 2 टाइम्स हाइट ऑफ द इमेज बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। देखो नेगेटिव क्यों लगाया मैं, दिस नेगेटिव इज फॉर इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज बताने के लिए नेगेटिव लगाना पड़ा। सबको समझ में आया? अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, मैं फिर से बोल रहा हूं साइन कन्वेंशन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा -u लेना। देखो मैं बताता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच आई बाय एच ओ, और वैल्यू -v/u भी होती है। तो एच आई की वैल्यू मैं क्या रखता हूं, -2ho/ho, और माइनस इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू -u ले लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, HO कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल टू -2u आ जाएगा। v इज इक्वल टू -2u की वैल्यू हम लोग मेन फॉर्मूले में रखते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है, -50। v का वैल्यू कितनी है, -2u, और u का वैल्यू -u रख दूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड रखा जाता है।
क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा जाता है, इसके लिए माइनस माइनस व्यू रखा। अब देखो ये तीनों नेगेटिव कॉमन लेके कट हो जाएगा। 1/50 इज इक्वल टू 1/2u प्लस 1/u। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 1/50 इज इक्वल टू यहाँ पर 1 + 2/2u आ जाएगा। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेप बनेगी 2u इज इक्वल टू 3 × 50। तो 2 से ये 25 हो जाएगा। 25 का 3 × 75 सेंटीमीटर इज द आंसर। 75 सेंटीमीटर इज द आंसर। बोलो बॉयज, बच्चे लोग समझा क्या? बहुत इजी चीज है। सिर्फ वही दो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, HI/HO वाला, लीनियर मैग्निफिकेशन एंड लेंस मिरर फॉर्मूला। अदरवाइज दीज थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब ये चीज क्या दिया हुआ है बेटा? HO दिया हुआ है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। U की वैल्यू नेगेटिव इसलिए लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन है 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ए। अरे तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो, तुम लोग का एग्जाम है क्या अभी? अच्छा अच्छा अच्छा। कॉनकेव मिरर, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हूँ, देखो ना, अभी वापस डाला हूँ मैंने ग्रुप पर। ग्रुप पर डाला हूँ मैं दो ही ग्रुप में ज्वाइन हूँ, बैच 4 और बैच 2 में हूँ शायद। बैच 2 वालों से मांग लो ना जरा, वो क्वेश्चन रिवाइज करते बैठो, आने वाला है क्वेश्चन में एग्जाम में। अभी भेजा हूं मैं 9:30 बजे। विच प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज। ध्यान दो, हाइट ऑफ द इमेज इज -3 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। अगेन नेगेटिव क्यों लिया मैंने? क्योंकि इन्वर्टेड बोला है, क्वेश्चन में बोला इन्वर्टेड इमेज बनेगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? फोकल लेंथ पूछिए बेटा, बिल्कुल आसान। हम लिखेंगे हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। वैल्यूज पुट करता हूं मैं। हाइट ऑफ द इमेज इज -3, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2, और ये माइनस एज इट इज। इमेज डिस्टेंस नहीं मालूम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू -16 सेंटीमीटर लेते हैं। बहुत सारे नेगेटिव आ गए, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 2 1 जा 2 8 जा हो जाएगा। तो 8 3 जा कितना होता है? 8 3 जा -24 होता है सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है। इमेज डिस्टेंस पता चलने के बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे वही वाला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ। 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू -24 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16 है। तो देखो इसका एलसीएम देखना पड़ेगा ना। अभी ये 8 3 जा है और ये 8 2 जा है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये -16 है, तो यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 हो जाएगा। देखो, तो 1/f इज इक्वल टू 2/48 माइनस, और ये -3/48। तो कितना हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू -5/48। अभी फोकल लेंथ निकाल लो। फोकल लेंथ कितना आएगा? 48 -48/5। तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 9.6, -9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, -9.6। देखो वो लोग 9.6 भी देते हैं ऑप्शन में, लेकिन -9.6 क्योंकि हमें कॉनकेव मिरर दिया हुआ है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ। तो पॉजिटिव वाले फौरन कट कर देना है, पॉजिटिव आंसर आ ही नहीं सकता है। बोलो बच्चों, समझा क्या? इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अरे भाई, यहाँ पर बच्चे आ गए एग्जाम लिखने के लिए, तो क्या करूँ, यही बेटर होगा। हाँ ठीक ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इरेक्ट इमेज, देखो इमेज इरेक्ट है,
इरेक्ट का मतलब होता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ द इमेज सॉरी, 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये दिया हुआ है ना। अभी इन्वर्टेड नहीं दिया हुआ था, इसके लिए मैंने नेगेटिव इन्वॉल्व नहीं किया। नेगेटिव का उल्टा इरेक्ट दिया हुआ है, इसके लिए पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो ये गिवन है, इज ऑब्टेन्ड विद अ कॉनकेव मिरर। देखो कॉनकेव मिरर है ना बच्चा, कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36। क्योंकि कॉनकेव मिरर है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 होती है। तो -36 डिवाइडेड बाय 2, फोकल लेंथ की वैल्यू -18 सेंटीमीटर आ जाएगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो एच आई से शुरू करते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करता हूँ, एच आई बाय एच ओ, और इसकी वैल्यू हो जाएगी -v/u, क्योंकि मिरर है ये। एच आई की वैल्यू 3ho है, और ये ho एज इट इज, -v/u की वैल्यू कितनी रहेगी, u की वैल्यू -u रहेगी। ठीक है बच्चों, एक्चुअली u की वैल्यू फाइंड करना है ना, तो u की वैल्यू u ही रहने दो। ठीक है बेटा, u की वैल्यू क्योंकि फाइंड करना है कि, तो u की वैल्यू u ही रहने दो। तो देखो ho कट जाएगा, v इज इक्वल टू -3u आ जाएगा। बात सही है। नेक्स्ट टाइम क्या करना है अपने को, अभी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ -18 सेंटीमीटर है, और v का वैल्यू -3u है, और प्लस 1/u एज इट इज। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/-18 इज इक्वल टू 1/-3u। अच्छा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो ना इसको। तो 1 - 3, मतलब 3 - 1 हो जाएगा ये। सही से करना पड़ेगा इसको, 3 - 1/3u। ठीक है बेटा, तो ये कितना बनेगा, -1/18 इज इक्वल टू 2/3u। 3 से कट मारते हैं इसको, 3 से कट मारते हैं, 3 1 3 6, तो u इज इक्वल टू -2 टाइम्स 6, तो u की वैल्यू -12 सेंटीमीटर आ गई। आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ दो फॉर्मूलेज यूज किया अलोंग विद द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के साथ प्लीज यूज करना, ताकि हमारा आंसर करेक्ट आए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। यस आगे बढ़ते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इंफिनिटी। देखो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी लेना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इंफिनिटी। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया ना ये। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर है। हाउ फार द इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज डिस्टेंस पूछा है, इमेज डिस्टेंस। चलो बोलो, फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल लेता हूँ r/2 से, तो ये 40/2 हो जाएगा। फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बच्चा, अब मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस एज इट इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इन्फिनिटी रखूंगा क्योंकि क्वेश्चन में इन्फिनिटी दिया हुआ है। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू +20 सेंटीमीटर आ जाएगी। दैट मीन्स +20 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, करना कुछ नहीं है, ये तो क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान था। ठीक है ना, आगे बढ़ता हूं मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज क्वार्टर, क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब क्या बेटा, 1/4 मतलब 1/4 होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द इमेज इज 1/4 ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है, मतलब u की वैल्यू पूछा है। अभी ऑब्वियसली u की वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो पॉजिटिव वाला आंसर ही करेक्ट कर दो, इनकरेक्ट कर दो, पॉजिटिव हो नहीं सकता। तो अपने को तो क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज, और इरेक्ट इमेज बोला है ना, इरेक्ट, इन्वर्टेड का ही मेंशन नहीं है, तो इरेक्ट लेंगे हम लोग। तो अभी देखो hi/m का फॉर्मूला यूज करता हूँ, hi/ho इज इक्वल टू -v/u। ठीक हो गया, hi की वैल्यू क्या है, 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u।
HO कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हो V इज इक्वल टू -U/4। ठीक हो गया। अब मैं उसके अंदर पुट करता हूँ कौन से फॉर्मूले में, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। फोकल लेंथ दिया हुआ है ना 30 सेंटीमीटर, हाँ फोकल लेंथ दिया रहना चाहिए था, +30 लिखूंगा मैं। +30 क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। चलो बोलो, अभी ये +30 और V का वैल्यू कितना है, -U/4 प्लस 1/U, U का वैल्यू U ही ले लेते हैं। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। 1/30 इज इक्वल टू 1 - 4/U, तो U इज इक्वल टू -3 टाइम्स 30, तो U का वैल्यू देखो -90 सेंटीमीटर आ गया। सबको समझ में आया, -90 सेंटीमीटर। यस एवरीवन प्लीज सेटल डाउन, सेटल डाउन, सिट इन अ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में बैठो। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कौन सा मिरर है यहाँ पर, कॉन्वेक्स मिरर है बेटा। यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो ये बात सही है कि कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है। बेटा एक बात ध्यान रहो, ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट में बी एनीवेयर, इट्स इमेज विल ऑलवेज बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आप इसका टेबल देख लेना, बिहाइंड द मिरर। और इमेज बेटा हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनती है। हमने 9th स्टैंडर्ड में इसका टेबल पढ़ा था, या फिर 10th स्टैंडर्ड में, अगर सीबीएसई हो तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, स्टेट बोर्ड हो तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे आपने। तो ये ध्यान रहे कि टेबल हमें याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर का भी, कॉनकेव मिरर का भी और प्लेन मिरर का भी। तो प्लीज ये बात को समझो कि ये क्वेश्चन सिर्फ टेबल से लर्न हो जाएगा। तो इमेज इरेक्ट बनेगी, ये स्टेटमेंट सही है। इमेज डिमिनिश बनेगी, ये भी स्टेटमेंट सही है। कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी इमेज रियल नहीं बनती है। इमेज लाइज बिटवीन पोल एंड फोकस, ये भी सही है। बात समझ में आई सबको। चाहिए तो मैं आपको ये करके बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बताया था मैंने, फेट के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक आता है, ऑप्टिक्स। तो इसके अंदर आप लेंस और मिरर के एनिमेशंस देख सकते हो। देखो मैं करके बताता हूँ। ये जबरदस्त ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड करो। ऐप भी मिल जाएगा, वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। हमें लेंस नहीं लेना है, मिरर लेना है, और मैं कॉन्वेक्स मिरर सेट करता हूँ। तो अब देखो बेटा, मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, मैं लेबल्स ऑन कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट की इमेज बनी। दिख रहा बेटा, दिख रहा क्या, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये उसकी वर्चुअल इमेज बनी। सही है। तो मैं ऑब्जेक्ट को चाहे कितना भी करीब लेके जाऊं, चाहे कितना भी दूर लेके जाऊं, उसकी इमेज देखो हमेशा बिहाइंड द मिरर बन रही है। और इमेज हमेशा हमेशा इरेक्ट है। image is always erect, image is always diminished, and image is always virtual. Or can you see, image lies in between pole and focus, पोल और फोकस के बीच में ही रह रही है। अब यहाँ पर रेज भी छोड़ करके आप देख सकते हो कि बहुत सारे रेज जो है इमेज से टकरा करके फॉर्म हो रहा है। इस तरीके से जो है काम होता है हमारा। बात समझे बेटा सब लोग, ठीक है ना। ये आप घर पे और भी ट्राई कर लेना। वैसे ही कॉनकेव मिरर का भी देखो, ये वर्चुअल इमेज है और ये हो गई तुम्हारी रियल इमेज। रियल इमेज इसलिए क्योंकि रियल रेज से बनेगी, देखो ये रियल रेज इंटरसेक्ट करके इमेज बना रही है। तो ये एनिमेशन बहुत जबरदस्त है, इससे आप पूरा टेबल अच्छे से लर्न कर सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब भी बताया मैंने, कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, डिमिनिश इन साइज होती है, रियल कभी नहीं बनती। इमेज लाइज बिटवीन, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी वही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। लेंस के ऊपर क्वेश्चन है, तो लेंस में बाद में करवा दूंगा क्योंकि अभी टाइम नहीं है। लेंस के मैं इस नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिरर के ऊपर है, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज एफ। कॉनकेव मिरर है, इसके लिए फोकल लेंथ को नेगेटिव पुट करना पड़ेगा, तो -f लूंगा मैं। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्स। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को -x लेना पड़ेगा।
रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आई बाय एच ओ पूछा है, एच आई बाय एच ओ की वैल्यू क्या होगी। पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ 1/f = 1/v+1/u। जी मैम। अलग अलग है मैम। ओके, मैं क्या बोल रहा था बच्चों, एच आई बाय एच ओ पूछा है ना, हम वैल्यूज पुट करते हैं 1/-f = 1/v+1/-x। 1/-x उधर ले लेते हैं तो 1/x - 1/f हो जाएगा। दैट मीन्स 1/v/f-x/xf हो जाएगा। तो v=xf/f-x। ठीक है। अब देखो एम का फॉर्मूला होता है एच आई बाय एच ओ और -v/u भी होता है। तो एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस वी का वैल्यू क्या है, xf/f-x अपॉन u का वैल्यू क्या है बेटा, -x। अभी माइनस माइनस कैंसल, x से x भी कैंसल, एच आई बाय एच ओ की वैल्यू हो जाएगी, एच आई बाय एच ओ की वैल्यू f/f-x। दिस इज द आंसर, f/f-x। कुछ गड़बड़ किया मैंने, f/f-x। नहीं, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, यही आंसर सही है। एक मिनट फिर से चेक करने दो, -f1+। तो ये तो सही करा मैंने, एक्चुअली यही आंसर सही है। मैं एक मिनट इंटरनेट पर सर्च करके बताता हूँ आपको, ये वेबसाइट पर गलत सॉल्यूशन भी हो सकता है। हाँ, एक मिनट, हमने क्वेश्चन सही से पढ़ा गया। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, अच्छा 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 अच्छा, रुको, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है बेटा, डिस्टेंस, ये मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस इज एक्स, बात सही है ना। मतलब फोकस से लेकर के, ऑब्जेक्ट से लेकर के फोकस तक की दूरी एक्स है। आर यू गेटिंग दिस। तो अपने को बेसिकली u माइनस एफ दिया हुआ है, x। आर यू गेटिंग दिस। रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछा है। हो गया ना, फिर कोई टेंशन नहीं। एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी/v/u कर देंगे। तो v/u कर दो, अभी 1/f इज इक्वल टू 1/v+1/u होता है। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/v 1/f -1/u। तो v इज इक्वल टू u माइनस f/f u होगा। तो अभी इसमें रखता हूँ एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी की वैल्यू क्या है, u माइनस f/u f। तो उसको उल्टा भी करना पड़ेगा, ये 1/v का वैल्यू है क्योंकि, ठीक है, ये 1/v का वैल्यू। तो v का वैल्यू हो जाएगा uf/u माइनस f/h ओ, u का वैल्यू u ही रखते हैं, u कैंसिल हो जाएगा, f/u माइनस f। अभी ये जो u माइनस f है ना बेटा, इसकी वैल्यू मैं x रख देता हूँ, देखो यहाँ पर। तो एच आई बाय एच ओ की वैल्यू क्या बन जाएगी, f/x। तो f/x करेक्ट हो गया। हाँ, क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में मैंने समझा था कि, पहले मैंने ये समझा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू x गिवन है। तो u माइनस एफ की वैल्यू x लेनी पड़ेगी, जिससे बात बन जाएगी। सबको समझ में आया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन अ कॉनकेव मिरर experiment an object is placed at a distance x1 from the focus। देखो ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम फोकस दिया हुआ है, अगेन वही वही सवाल कर रहे हो, ठीक है। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ x2 फ्रॉम द फोकस। मतलब v u माइनस f की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x1, और v माइनस f की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x2। ठीक हो गया। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर वुड बी, फोकल लेंथ पूछा है।
बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है ना, तो u को क्या ले लेंगे बेटा, x1 प्लस एफ, v को क्या ले लेंगे, x2 प्लस एफ, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन x1 प्लस एफ प्लस वन अपॉन x2 प्लस एफ। अब इसको सॉल्व कर लो। बात समझ में आ रही, थोड़ा लंबा जाएगा ये, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये मतलब इसमें x की वैल्यू, f की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये अभी मेरे पास जगह नहीं है। वन अपॉन एफ इज इक्वल टू x2 प्लस एफ प्लस x1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस एफ इंटू x2 प्लस एफ। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इधर उधर लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत लंबा जाएगा इसमें। लेकिन मैं इसमें सट्टा क्या बताता हूँ मालूम क्या, इसमें आप देख लो कि एक्स, अपने पास ऑलरेडी ये चीज दी हुई है ना बेटा, मतलब ऑप्शन में से ऐसा क्या रखूंगा मैं कि आंसर आ जाए। सबसे पहली बात, डायमेंशनली देखा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों भी। तो आंसर इन दोनों में से ही है डायमेंशनली। अच्छा, ये डायमेंशनली ये दोनों कट हो रहे, देखो डायमेंशनली ये दोनों कट हो रहे, क्योंकि इसका डायमेंशन मीटर स्क्वायर होगा और इसका डायमेंशन 0 होगा, तो ये दोनों डायमेंशनली कट हो गए, तो फिर आंसर ये दोनों में से है। अब मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आई थी, x1 प्लस एफ और प्लस x2 प्लस एफ, तो मैं ये बोलता हूँ कि इस फाइनल इक्वेशन में तुम ये वैल्यूज डाल करके देख लो, एफ की वैल्यू, अगर अगर ये रिकमेंडेड वैल्यू डाल करके देखते हैं और LHS RHS सॉल्व होता है, आंसर 1 मिनट में आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बड़ा है। इसको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए सॉल्व करने से अपने को कम से कम 10-15 मिनट जाएंगे। तो वो ना करते हुए आप ये ऑप्शन ऑप्शन में से पहले ये दोनों कट किया मैंने। क्यों कट किया, क्योंकि डायमेंशनली मैच नहीं हो रहे। अब ये दोनों ऑप्शन तुम क्या करो, डाल के देखो RHS LHS मैच हो रहे कि नहीं। अगर RHS LHS मैच हो गए तो आंसर हो जाएगा, तो ये वाला LHS RHS मैच होगा, मैं आपको डाल के बताता हूँ। ठीक है ना, चलो, बात समझ में आ रही है। 1 मिनट मुझे पूछने दो, नेक्स्ट लेक्चर किसका है? ए तुम लोग बात नहीं करो। हाँ भाई, क्या करना है, एंड कर दो। हाँ, चलेगा। ओके बच्चों, ये बाकी बच्चों का एग्जाम है इस क्लास में, तो मुझे लेक्चर एंड करना पड़ेगा। बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है ना, कोई तो मीटिंग एंड कर दे। ये मीटिंग एंड करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? हाँ, लीव है, लीव कर दो। चलो, ठीक। हाँ हाँ।